A very good afternoon to everyone. And first of all, I'm very grateful to the Karnavati University, the management, who has given me this special honor of addressing the most vibrant minds in the country. And I'm referring to the youth and the future of India, all the students who are present here. Thank you so much. Yesterday was invariably a busier day than I generally have. And the third and the last flight was the one I took to reach here. And it was around 1:30. The management has been thanked, the president has been thanked, the dean has been thanked. But I would like to start by thanking Ritvij, Purvi, Abhay and Nikunj. And I tell you why. Because they represent every person who has contributed immensely in organizing such a beautiful event where in a vibrant democracy, even with different ideologies, we can share our views, we can still join our hands to applaud a different view, and that I think is a celebration of our democracy that our forefathers gave us. They had roses in their hand, they had smile on their faces, and I felt guilty that at 1:30 they are receiving me. But what it was a spirit of what we say. We honor the guest and we make him feel special. And thank you so much to all of you for making us feel so special, working tirelessly. So this event for me, I thought should have started with this note, and therefore, thank you. Now, when you wear too many caps, sometimes it is also difficult to ensure that there are no contradictions. But it also gives you an opportunity to address various issues from different perspectives. And Ravinderji here gave a wonderful speech, directly coming from his heart, touching your heart, making a special place. But the three perspectives that I offer to you, the first would be as a lawyer. The second would be as a politician from the BJP, a very onerous task because it's not one of those designations that people respect these days. Third is as a citizen of the country. And it would be my endeavor to give you a holistic perspective of how important today's issue is. It is important for our country, for its integrity, for our existence, and it is important for every citizen. And when I say every citizen, it doesn't only mean our brothers and sisters in Kashmir, Jammu and Ladakh. It means every citizen who is in Kanyakumari, who is in Assam, who is in Gujarat, or who is in Kashmir. Because that is the spirit of India that unites us. In our diversity lies our strength. So, first I will start with the legal perspective, which I think is the most important. Because sometimes in rhetoric, sometimes in emotions, we get carried away. We are human beings. We forget the intrinsic spirit of our Constitution. We forget that with rights also comes a responsibility of doing our fundamental duties towards the country. We forget that greater good of the country will always have primacy over individual fundamental rights. And therefore, let me first start by Article 370 in Chapter 21. Article 370 in our Constitution finds a place in Chapter 21. Chapter 21
starts with the word. Can anybody in the audience tell me those three words that are used for chapter 21? And what are these three words? Anyone in the audience? Okay. So, that is why I think it is very, very important that we start with this. The three words are: one, temporary; second, special; third, transitory. Can anyone in the audience, we are discussing such a important issue, tell me what is the first word of Article 370? Can anyone? So, it doesn't surprise me. But that is why I said it is important that we understand our responsibility as well. The first word of Article 370 is temporary. When the Constitution framers framed Article 370, you have been very generous. The management, they've given us 20-25 minutes to speak. But it was so ironical that in the Constituent Assembly that gave us our Constitution, this so important article was only debated for 10 minutes. It starts with the word temporary. And why does it start with the word temporary? I'll tell you. In my hand is the Constituent Assembly debate. And I am on the land where once Sardar Patel touched the sky and he set an example for the entire nation. The man who was known for his iron will, the man had the determination to ensure that 562 princely kingdoms are merged to give us one identity, the identity of our country called the Bharat, India. And Sardar Patel ji, when he was asked to place this Article 370, he had reservations. So a gentleman called Gopal Swami Iyengar, he placed the proposal for Article 370. And the line says, and I am reading it, a member, Maulana Hasrat Mohani, asked, why special status to Kashmir and why not to other state? Is it not discrimination? So Gopal Swami Iyengar said, the discrimination is due to the special conditions of Kashmir. And the state is not yet ripe for this kind of integration. Thus, this is a temporary provision. And now I will tell you what Jawaharlal Nehru ji, the first Prime Minister of the country, said. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, ये वो अनुच्छेद है जो घिसते घिसते घिस जाएगा. मतलब अनुच्छेद नहीं, साबुन की टिकिया है कि ये घिस जाएगी. लेकिन दुर्भाग्य देखिए, that this temporary provision, nobody ever had the political will to take the route of the Constitution and to abrogate this article. And I am proud to say, I am very, very proud to say, that today we have a Prime Minister in Narendra Modi ji, and we have a Home Minister in Amit Shah ji, who did not worry only about the vote bank. मेरी कुर्सी का क्या होगा? They only thought of one thing, that there should be equality in the country, and if Kashmir, Ladakh and Jammu is to prosper, then this article, which was framed by the constitution makers as temporary, needs to be abrogated. And हम सब ने, आप सब यहाँ हैं, हमने सरदार पटेल जी को तो नहीं देखा, लेकिन जब पार्लियामेंट में श्री अमित शाह जी गरज रहे थे, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरदार पटेल जी की छवि और उनकी विचारधारा जरूर अमित शाह जी में झलक रही थी. The second legal part, which is very, very important,
is the preamble of the country, of the Constitution. It starts by the words, the most beautiful words. It empowers every citizen. It says, we the people of India. The people of India gave this Constitution to themselves. It wasn't any external power that gave us the Constitution. And that is why we respect the sanctity for this Constitution. The preamble spoke about justice, social. So I ask, as a citizen like you are, I have a problem. When a Kashmiri woman has a child, but she marries outside Kashmir, that child does not have the right to inherit property. Why is it so? Is it not a breach of the right to equality? I have a problem with that. I have a problem also with the fact that we talk about equality. Equality of everyone. That is what Bhimrao Ambedkar Sahab said. No matter whether you are born in an affluent family or you are born in a normal family, this country will ensure that you have the same opportunity to rise and become the President of India, Prime Minister of India. So I asked, what about those people from the Valmiki Samaj who decided to serve the Kashmiri community, not for a year, not for two, but for more than 4 decades? And they were never given the residentship of that state. And in fact, I must share with you, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ 35A के साथ, तो एक ANI पे वीडियो चला था, मेरी ट्विटर लाइन पे भी है वो। उसमें एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बगल में उसकी बेटी थी। उसने कहा, मेरी बेटी हमेशा स्कूल में, कॉलेज में अव्वल आई, मेरे पास पैसे नहीं हैं और यहाँ का जो संविधान है वो इजाज़त नहीं देता कि बाहरी लोग यहाँ पढ़ें, तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाता था सरकारी कॉलेज और स्कूल में। लेकिन एक बात अब सुनिश्चित हो गई है कि मेरी बेटी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ेगी और एक दिन एक बड़ी डॉक्टर बनेगी। ये जो सपना देखा वो पूरा जो हो रहा है, राजनीति से ऊपर उठते हुए, एज अ लॉयर आई एम स्पीकिंग एंड आई एम आस्किंग यू, how can you deprive a person who is your brother, who has the same love for the country, but he and his family is deprived of the same fundamental rights that people now want in Kashmir because they want to create unrest there. That fundamental right that they are asking for is something that we also need to speak about, and I'll talk about it. Next, हर कोई कहता है मेरे मूल अधिकार है, मेरे मूल अधिकार है, मेरे मूल अधिकार है। किसी ने कभी ये पढ़ा है कि मूल कर्तव्य क्या है? विचित्र बात है, ये विचित्र बात है। जिस संविधान को वो पढ़ के रुक जाते हैं मूल अधिकारों पे, उसी संविधान की मैं प्रतिलिपि लेके आया हूं। लोग अक्सर कह देते हैं कि देखिए झूठ बोल रहे हैं, कोई और डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं कागज जरूर रखता हूं। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मूल कर्तव्य क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य कहते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आपकी ड्यूटी है, ये जो यंगर जनरेशन बैठी है, और उनकी भी ड्यूटी है जो कहते हैं कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. It is our duty. So then I ask, how is it that if certain curbs are put in place for the greater good of our country, then people cry foul and then they say that why is it that these curbs are put? Did they raise this same question when Burhan Wani was brought down by a brave Indian army and there were curbs for more than 2 months? Did these people come out? No, they did not.
And now they talk about the curbs. So I would only say that it is important to know that the rights given to us and the right that they talk about is Article 19(1)(a) particularly, which talks about the freedom of speech and expression. मैंने अभी बात करी कि वो संविधान को पढ़ते हैं तो एक हिस्सा पढ़ते हैं, एक नहीं, लेकिन ये भी गजब का पढ़ना है संविधान को कि वो एक प्रावधान को पढ़ते हैं और उतना ही पढ़ते हैं जहां तक सूट करता है और नीचे का छोड़ देते हैं। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं। Article 19(1)(a) says all citizens shall have the right to freedom of speech and expression, and then there are many other rights also, like assembling peacefully, the right to have associations or union. But is this right absolute? Is this right that you can do anything and nobody can stop you? So the next line, which these so-called human rights activists completely overlook, is, and I read and I quote, insofar as such law imposes reasonable restrictions on the right conferred by the said subclause in the interests of sovereignty and integrity of India, the security of the state. So for the security of the state, for integrity and sovereignty of our country, there can be reasonable restrictions in accordance with law, which can be tested in the court. So therefore, ये जो 72 years की बात है, मैं फिर आपसे कहूंगा, मेरा केवल एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ज्यादा घुमा के बात नहीं करना चाहता हूं। अगर ये टेम्पररी था, तो 72 साल तक किसी भी हुकूमत को, किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों नहीं लगा कि इस टेम्पररी क्लॉज को खत्म किया जाए जो संविधान कहता है? और अगर ये परमानेंट है तो ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि इस टेम्पररी क्लॉज को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को और आप परमानेंट बना देते? इसका उत्तर आपको कोई नहीं देगा। और उसकी वजह क्या है मैं बता दूं। उसकी वजह केवल इतनी है कि अभी तक हर किसी ने वोट बैंक को देखा, हर किसी ने ये देखा कि ये जो आबादी है वहां पे, इसमें एक इलाका कश्मीर का ऐसा है जहां पे कौन से धर्म के लोग ज्यादा हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि जम्मू और कश्मीर में लद्दाख भी आता है, जम्मू भी आता है, और सारे भारतीय किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, किसी लिंग के क्यों ना हो, वो सब बराबर है। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए और जैसा आपने सुना है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अनुच्छेद 370 को ऐसा संशोधन किया कि आज वो पूरी तरह से ऐसा एक क्लॉज है जो संविधान में है लेकिन जिसमें कोई पावर नहीं बची है। अनुच्छेद 35(a) जिसकी बैकडोर एंट्री करी गई थी थ्रू अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, उसको खत्म कर दिया गया। और एक व्यापक सवाल यहां पे ये आता है कि आप बताइए, इतना भेदभाव हमारे देश का जो मेजर था, अपनी जान देके वो शहादत करते हैं, देते हैं, और उनकी वाइफ को ये राइट नहीं है कि वो वहां पे अपने बच्चों को वही सुविधा दे जो वहां पे परमानेंट रेजिडेंट है उसको मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर शादी कर ली। लेकिन कश्मीर ने ऐसे मुख्यमंत्री जरूर देखे हैं जिन्होंने बाहर शादी करी और उनका बच्चा जम्मू और कश्मीर का जो है मुख्यमंत्री बन गया। क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये हमारे संविधान को तार तार नहीं करता है? और इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि हां, बिल्कुल करता है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और ये राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू में सबसे अहम बात यह है कि हर कोई कहता है कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। तो आप मुझे ये बताइए, कश्मीरियत हमें तब दिखती है जब पूरा देश, और कहीं का भी टैक्स पेयर क्यों ना हो, वो कहता है कि कश्मीर में आप फंड्स भेजिए, वहां पे एजुकेशन का अधिकार हो, वहां पे समान अवसर मिले, क्योंकि ये हमारे देश का अभिन्न अंग है। वहां का भारतीय अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।
ये लोग कहते हैं कि इंसानियत का क्या, तो मैं कहूंगा इंसानियत का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जिस आर्मी के ऊपर बच्चे पत्थर मारते थे और वो पत्थर कोई और नहीं उन्हीं के परिवार वाले देते थे, वही आर्मी जब कश्मीर में फ्लड आ जाते हैं तो उस बच्चे को अपने सीने से लगा के उसके घर पहुंचाता है। क्या ये इंसानियत का अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? बार बार मैंने सुना दिल जीतो, दिल जीतो, दिल जीतो, दिल जीतो, तो मैं इसको जमहूरियत से जोड़ता हूं। आप फर्क देखिए, जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जब वहां पंचायत के चुनाव हुए, जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुए, तो जमहूरियत का अपमान करते हुए उन्होंने बॉयकॉट किया इलेक्शन को। लेकिन हम इस जमहूरियत की रक्षा करेंगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसने दिया? फिर से हमारी देश की सेना ने दिया। और क्यों मैं कहता हूं, हमारा भाई औरंगजेब शहीद हो गया, उसकी मां का जज्बा एक बार देखिए, उसके फादर का जज्बा एक बार देखिए कि उनके दो बेटे और थे और दोनों जो है हमारी सेना में आ गए कि हम तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे देंगे। इससे बड़ी जमहूरियत को आगे बढ़ाने की मिसाल नहीं हो सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो राइट, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो इतना ही कहूंगा, इसकी तुलना करिएगा। नॉर्मलसी आ रही है, ये हमारा देश है कि 5 और 6 अगस्त को जब ये पास हुआ, उसके बाद जब शुक्रवार पड़ा तो हमने अपने सारे लोगों के, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए ईदगाह खुली और वहां नमाज पढ़ी गई। ये हमारा देश है और हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि जब पहली बार बकरीद आई तो सबने कहा बकरीद कैसे मनेगी, तो भी वहां बकरीद मनी। ये हमारा ही देश है जहां पे जो 72 साल में कैंसर नहीं हटाया गया उसको इस सरकार ने हटा दिया। उसके बावजूद वहां पे आज टेलीफोन लाइन चलने लगी, वहां मोबाइल फोन पोस्टपेड चल रहे हैं, वहां स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अयूब पंडित जी के घर जाना, औरंगजेब भाई के घर जाना और उनकी माँ और फादर से पूछना, वो कहेंगे जिंदगी भर के लिए मोबाइल ले लो, घर ले लो, खाना ले लो, मेरा बेटा लौटा दो। The extent to which a family goes to ensure that our country remains united, strong, and on the other hand, some pseudo human rights activists, they come out without even reading the constitution which I have placed before you, and then they talk about fundamental rights. एक बात कंसल्टेशन की आई कि कंसल्ट नहीं किया। सो इन अ डेमोक्रेसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी is the parliament, and when discussions were held in the parliament, you will be surprised, the MPs from these political parties, they were tearing their own clothes rather than placing before the nation what are their arguments so that there should be no abrogation of these articles. And in the end, I would only like to say one thing. My time is almost over, and I generally like to be a very disciplined speaker, so I'll not take too much of time. But I really thought that the legal perspective and constitutional perspective is very important for the young minds. They should know that everything that has been done is in accordance with law and is in the greater interest of the country. I will only like to say that the political parties also need to introspect. They need to understand that yes, opposition is good, but there have to be certain issues in our vibrant democracy where all political parties will come together to say that on this one issue which pertains to our national security and integrity, we are one and there is no dissent, there is unanimity. And why do I say that? महबूबा मुफ्ती का बयान है, उन्होंने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किया गया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और यह भी गजब की बात है कि जिस दिन अनुच्छेद
370 रुपए से खत्म हुआ तो मैंने जनाजा जाते देखा पीडीपी का, और कांधा देने वाला कोई नहीं था। अगले नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, बुरहान वानी, भारतीयों की जान ले ली उसने। ये व्हाट्सएप वाले हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, व्हाट्सएप नहीं चलता है तो दर्द होने लगती है। जिन भारतीयों को मारा उसके जनाजे पे उमर अब्दुल्ला, ये वो है मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरह जिन्होंने संविधान की शपथ लेके कहा था कि इस संविधान की मैं रक्षा करूंगा। वो कहते हैं आज कश्मीर को नया हीरो मिल गया है, मस्जिदों से आवाज आ रही है बुरहान वानी नया हीरो है। और तीसरे मेरे साथी यहां बैठे हैं, और ये केवल वैचारिक है इसलिए मैं रख रहा हूं ये बात, हमारे शत्रु नहीं साथी हैं। अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में पूछते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से, अमित शाह जी ये मामला तो यूनाइटेड नेशंस में लंबित है, तो ये कैसे हम लोग एब्रोगेट कर सकते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूं यूनाइटेड नेशंस इस मामले को ले जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी गलती थी। और कश्मीर पहली बात हमारा अभिन्न अंग है, था और आगे भी रहेगा। और दूसरा, अपने अंदरूनी मामले में हम किसी बाहरी को जगह नहीं देंगे कि वो बताए कि हमें कश्मीर से डील कैसे करना है। और अब मैं एक बात और, ये मेरे मन में जो विचार आते हैं, नॉट एज अ लॉयर, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, सिर्फ नागरिक होने के नाते मैं रेज करके जा रहा हूं। आई लव द स्पीच बाय अ स्टूडेंट who hails from Kashmir. And that is the beauty of democracy, that you may have very divergent views. You echo them, you listen to them, you disagree. And the Honorable Supreme Court has laid down this principle very nicely in Shri Singh's case, where they say that right to speech. You can be an advocate of a certain philosophy. You can also propagate that philosophy. You can dissent with somebody's philosophy, but when it comes to inciting violence, it doesn't remain freedom of speech. And that is the time all these reasonable restrictions that I spoke about, they come in. तो ये हमारी जो छोटी बहन थी उसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मैं केवल इतना ही कहूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत जगह है। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वर्दी में जो जवान आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं उस पर पत्थर चलाने लगे, उनको मारने लगे, क्योंकि ये हमारा भी विश्वास है कि बुरा वक्त जब आएगा तो अगर कोई आपके लिए खड़ा रहेगा, और खड़ा रहेगा नहीं, अपनी जान पे खेल जाएगा, तो वो हमारे भारत की सेना है, आपके भारतीय नागरिक हैं। कश्मीर में जब फ्लड आता है, कोई भारतीय ऐसा नहीं है जिसे दर्द नहीं होता है। जो हम कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि एक प्रश्न सबके लिए छोड़े जा रहा हूं, एक आतंकवादी के जनाजे पे 50,000 लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि जब कश्मीरी पंडितों के हक की बात आती है तो 10,000 लोग नहीं निकल के आते? मैं ये प्रश्न जरूर छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा क्यों है कि जो लोग गरीबों की, कश्मीरियों की बात करते हैं, आज वो खुद बड़े बड़े धन्ना सेठ बने हुए हैं, और जो बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं उनके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? ये मेरा प्रश्न जरूर है, सोचिएगा। और मैं अंत में एक ही बात से बोल के जा रहा हूं, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं कि कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आए और ये कहे कि एक भारतीय मारा गया और इस भारतीय के मरने के बाद इसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब समाज में कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक मुसलमान मारा गया और हमारी कौम खतरे में है। तो मैं उनको इतना जरूर कहूंगा, अब्दुल हमीद साहब हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, ये केवल मुसलमानों के नहीं हैं, ये हर भारतीय के हैं, और इन्हें हमें इन पे नाज है। इस एजेंडे को धर्म की दृष्टि से मत देखिए। और मेरे मन में केवल एक ख्याल आता है, वो ख्याल इतना है कि मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं और
सांप्रदायिक शक्तियां दंगा कर रही हैं। आपके पास एक 6 साल की बच्ची दौड़ते हुए अगर आए और पीछे एक झुंड है किसी भी धर्म का हो और वो आपसे कहे कि अंकल मुझे बचा लीजिए, तो क्या आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम नमाज पढ़ती हो या मंदिर में जाती हो पूजा करने? मुझे पता है हर भारतीय उसे अपने सीने से लगाएगा और बचा के अपने घर ले आएगा। यही भारतीयता है, यही भारतीयता है। एक बस अंत कर रहा हूं। इट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक, सो यू नो देयर वाज सो मच टू से, बट आई पर्सनली फील, एंड दिस comes from my heart, things that never happened in the last 72 years or for decades are being done by a strong Prime Minister of the country, and Article 370 cannot be abrogated. करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, हो गया। ट्रिपल तलाक, a vice in our society, could never be eradicated. समाज खड़ा हो जाएगा, डर जाओ, वोट चले जाएंगे। मोदी जी आए, करके दिखाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सिंस 1971 never has the Indian Air Force penetrated into the airspace belonging to another country. बट अगर उन्होंने हमारे देश की अखंडता पे हमला किया तो हमारी वीर वायु सेना ने घुस के पाकिस्तान को ठोका। One rank, one pension, 40 years, the file moved from one desk to the other. Nobody wanted to honor the veterans and the families of the martyrs who've done everything for us. And one rank, one pension was implemented with a steely resolve by none other than Narendra Modi ji. When it comes to the country, he says nation first. NRC was not being implemented in spite of Supreme Court orders. And then came a man called Narendra Damodar Das Modi, and he ensured NRC is implemented for our greater good. Rohingya, people heard the infamous line, the first right of the country belongs to the minorities. No, it belonged to the illegal immigrants like Rohingyas. And now comes a man called Narendra Modi ji, and we are ensuring Rohingyas are sent back, so the resources of the country belong to you first. And लास्ट एक लाइन पे खत्म करके जा रहा हूं। हर जो आप रास्ता मुश्किल लेंगे, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। विरोधी हैं, कहते हैं कि ये हो नहीं पाएगा, तो उनके लिए अर्ज किया है, और फिर एक लाइन आपके लिए अर्ज करूंगा। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे ये यकीन है कि पूरा आसमान कम है। This is for our country, for our dynamic leadership that the country is getting. And आप सबकी शान में अर्ज करके जा रहा हूं, you are the future of the country. In this hall I see the future Prime Minister of the country. In this hall I see the future Chief Justice of India. And in this hall I see probably an army general that is not a male but a female, so that we can break gender barriers. आपकी शान में बोल के जा रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। जिनको अपनी ताकत का पता होता है, जिनको सत्य के रास्ते पे चलना आता है, जिन्हें विश्वास होता है, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है। हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है। हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, इट इज एन ऑनर टू बी हियर एंड आई एम श्योर दैट यू पीपल एंजॉयड। सो अंत में a salute to all the brave hearts who are some way protecting us, ensuring that all these rights that we enjoy are safe. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Thank you.